Good afternoon, traders. I will show you how one indicator and the price action will help you to make money in the market and your basic understanding in the market. Okay, so let's go. I have selected a bank nifty here. Please make a note that I have selected a bank nifty for 5 minutes. And I have selected one indicator which is called awesome indicator, or it's a Bill Williams awesome indicator. You can always see that it's here, and it has got a histogram in it. Okay, the first thing is when we go for the replay, in the replay we go for the replay. Let's go for the replay, and let's select from randomly from, okay, from here we will select this. Okay, now I will just increase the contrast, because I am 40 plus and I just need little more contrast on the white background. Okay, so now in the replay button I will go and select 3 seconds for every one candle. Okay, the selected time frame is 5 minutes. Let me select this. Let me, hey, 1 second. Let me select this. Okay, and selected time frame is 5 minutes. You can see that, right? Okay, now one of the logic you always apply is trend line. That is the logic behind every successful trader. The second is price action. The third is indicator. Now this indicator is very important. If you can see it, it's well and good. Now what, say for example we are going to open now. What will happen after the open? Okay, I'll pause and I'll also make this as a 35. Okay, so I'll start now. So the first bar will print at every 3 seconds. Okay, this is the first bar. It's broke out. It's having a follow through. It came down. It is attempting to make a move up. Again it came down. It is again attempting to move up. Again it came down to trend line. Now what are we seeing here is we are seeing a flag pattern here. And you have sufficient time, this is 5 minutes. You have sufficient time to identify this. This is flag. The flag indicates basically you have one more rally due. Okay, you have one more rally due, or you may find a gap up also, because this is a index trading, so you may find that. Okay, so I will just, okay, note that the price now has closed below the trend line. So once when the price is closed below the trend line, and if you see carefully, your indicator is showing that it is negative. It is negative. Do you have to short sell here? You can, by the way, you can short sell, but we will wait for failure to move high. That means you are likely getting in a 1 or 2 bars like this before coming down, and you will short sell over here only. Okay, if a price makes a new high, then you will wait for one more setup to form. This is all you have to do. आपको इतना छोड़ के कुछ नहीं करना है, आप पैसा ही पैसा बनाओगे। यहाँ पे हमेशा आप ये चीज देखिए, मैं दूसरा चीज दिखाना चाहता हूँ। ये आपका बाई सेटअप बना, ये आपका बाई सेटअप प्रूव हुआ, यहाँ पे ग्रीन पीक हुआ, यहाँ पे ग्रीन पीक हुआ, उसके बाद ये प्राइजेस नीचे आने लगे, उसके बाद प्राइजेस नीचे आने लगे, हिस्टोग्राम नीचे आने लगे. That means we need to wait for a histogram to tell us whether to short sell or not.
Let's see what happens next. Okay, the third bar basically, third bar ये indices है, ठीक है. You have to sell below the third bar. Third bar is this is the third bar. इसके नीचे अगर ये सपोर्ट के नीचे जाता है तो you have to sell. ये इंडेक्सेस है तो इसमें ये हमेशा ये प्रॉब्लम रहेंगे ही रहेंगे, गैप का, गैप अप और गैप डाउन. तो हाँ, देन नाउ इट इज कंफर्मिंग, बट you will still wait the price to come back, retest this before that starts dropping. तो जब ये हायर लो बना के इसका पिवट को जब तोड़ेगा, we are going to sell at 59,300 and I will show you how. At that moment you will also observe how the histogram will behave. Okay, histogram went down, price went down. Okay, in this case there is no pullback, or we will wait for the pullback because we are not going to enter. इसके यहाँ पे भी आप कर सकते हो, यहाँ पे ब्रेक होते ही आप कर सकते हो, बट इट इज क्वाइट रिस्की बिकॉज इसके नीचे आते ही ये रिवर्स हो जाएगा. It is an ideal understanding, but if you see now there is a green bar in the histogram suggesting that market is likely to make a reversal now. Reversal, once the green bar comes, then you have around 5 bars. Fifth bar will be the reversal bar usually. तो देखते हैं. ओके फाइन, तो लेट्स सी. ये ग्रीन बार बना आफ्टर स्लोइंग, आफ्टर एक डोजे के बाद ये ग्रीन बार बना. एक मिनट, आई विल नॉट डू लाइक दिस, आई विल शो यू इन दिस वे. ये ग्रीन बार बना, फिफ्थ बार फ्रॉम दैट, यानी कि 1 2 3 4 एंड फिफ्थ बार जो बना है वो दैट इज दिस वन. ओके, and the fifth bar is green, no it is red. After fifth bar you have next 3 green bars, 1 2 and 3. this is your buy setup. इसके ऊपर अगर क्लोज होता है so you are going to buy this. ये काउंटर मूव के लिए है. देखिए मैं अभी जो बता रहा हूं, दिस इज ए काउंटर मूव. so you are to going to buy this here and your stop is here and your target will be recent high 59,200. ठीक है, this is what is basically. so I'll put a buy here and मैं यहाँ पे सेल डाल सकता हूँ क्या? नहीं डाल सकते. ये मार्केट का ड्रामा. Okay, now what is happening is the bars have already compressed towards zero, but the price is not moving. If the price is not moving, then the better understanding is that you put the zero at a very least minimum here. इसके ये बार जो आपने बाई किया उसके नीचे क्लोज होता है, इफ इट क्लोजेस बिलो दैट यू आर गोइंग टू एग्जिट. अगर ये ऊपर जाती है, इफ इट गोज अप देन यू विल स्टार्ट ट्रायलिंग द स्टॉप बिकॉज दिस इज एन अ काउंटर मूव. ठीक है, सो नाउ यू सॉ इट हैज गॉन अप. तो आपका अभी स्टॉप कहाँ रहेगा? इफ यू आई थिंक यू हैव बॉट हियर, यहाँ पे
तो आपका स्टॉप यहां पे आ जाएगा. योर स्टॉप विल कम एट द कॉस्ट नाउ. There is a green bar and coordinated with the green bar there is a green bar over here also. So your stop will come to the cost now. यानी कि आप काउंटर ट्रेड में भी आप अपना पैसे को बचा के रख सकते हो. ठीक है. मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा वो जो ग्रीन बार है जहाँ पे आपका एंट्री है वहाँ पे, हाँ ये आपका एंट्री एक्चुअली यहीं पे है. तो एंट्री के थोड़ा ऊपर 58,935 पे मैं ये लगा देता हूँ. क्या लगा देता हूँ, मैं एक लाइन लगा दिया. अगर उसे टैप होती है, ठीक है, 58,914.70 इज आपका बाय है. 58,935 यानी कि 15 पॉइंट, 15 से 18 पॉइंट के बीच में आपका स्टॉप है. और आपका टारगेट कहां पहुंचना चाहिए, एटलीस्ट आपका टारगेट यहां पहुंचना चाहिए, दिस वन 59,165. ठीक है, देखते हैं. एट दिस मोमेंट यू आर मोस्ट वेलकम टू प्लेस द स्टॉप समवेयर हियर. ये ब्रेकआउट दिया ना, यहां पे आराम से रख सकते हैं. 58,900 से लेकर 59,068 तक आप टैक्स रख सकते हो, बिकॉज दिस इज काउंटर मूव. ध्यान रखिए, प्लीज रिमेंबर दैट यू आर ट्रेडिंग ए काउंटर मूव, यू आर नॉट ट्रेडिंग इन द फ्लो, यू आर ट्रेडिंग अगेंस्ट द फ्लो. बिकॉज यहां पे आपको ट्रेड नहीं मिला, यहां पे ट्रेड नहीं मिला तो इसका काउंटर ट्रेड करेंगे हम लोग. ये सभी एक्सपर्टाइजेशन कब आ सकती है, जब आपको फुल नॉलेज एक इंडिकेटर और प्राइस एक्शन के बारे में जब आता है तभी. योर स्टॉप आउट, योर स्टॉप आउट बेसिकली. मैं अब ये सॉरी, मैं यहां पे सेल दबाना चाहिए था. योर स्टॉप आउट बेसिकली, लेकिन बट इट विल गो टू द 59,165 और समटाइम्स इट माइट नॉट गो. ठीक है. यहां पे इसने एक डबल टॉप, यहां पे एक डबल टॉप पैटर्न बनाया है. ठीक है. तो पॉसिबिलिटीज है कि यहां से आपको नीचे की तरफ एक और एक ट्रेड भी मिल सके अगर ये ऊपर क्लोज नहीं होता है तो. ठीक है. सो दैट मीन्स द मार्केट गिव्स यू सम सर्टेन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. Okay, now I will show you there is a divergence between this and there is a divergence between this. अभी do you have to sell it? No, it is still in the bracket. अगर ये ऐसे आके ऐसे भी ऊपर जा सकता है. So we are not going to sell it here. We will wait for the histogram to come below. अगर हिस्टोग्राम नीचे आता है then we will wait for the pullback and then short sell. ठीक है. हिस्टोग्राम नीचे आया, ठीक है, we will wait for pullback. Okay, opportunity, हाँ, we will wait for this pullback. Now this is actually in a 1 2 3 यहां तक जाने की कोशिश कर रही है. We will see what happens. You can also use other modes of filtering like moving average वगैरह आप filter use कर सकते हो. I am just trying to be very simple and very practical, being practical कि देखो भाई, मार्केट हमेशा एक अपॉर्चुनिटी देती है लेकिन उसको सीखने के लिए ज़रूरी पड़ती है. देखो मैंने जो बोला था वैसे ही हुआ. ठीक है. एंड आर वी लुकिंग ए बुलिश? नाउ वी आर नॉट लुकिंग ए बुलिश. नाउ वी आर लुकिंग फॉर एन बेरिश ट्रेंड सेटअप. यानी कि अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें एक करना चाहिए कि भाई ये दोनों लाइनों को निकाल दो, ये मतलब नहीं रखते हैं अभी. नाउ वी नो दैट दिस हैज मेड अ एन वेव. एन वेव मतलब ए बी एंड सी, एन वेव बोला जाता है. एंड दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज गोइंग टू बी सी.
तो ये पैटर्न है हम लोग। अभी हमें क्या चाहिए, वी नीड ए बुले, अभी हमें एक ऐसा एक बेरिश एंगल्फिंग वाला मिलेगा जो ये प्रॉपर नहीं है, इट इज नॉट ए प्रॉपर। अगर अच्छा खासा बेरिश, तीन कैंडल को इग्नोर करने वाला बेरिश एंगल्फिंग मिलेगा, वी आर गोइंग टू शॉर्ट सेल। ठीक है, अभी ये एक फ्रैक्टल बना रही है यहाँ पे, एक फ्रैक्टल यानी कि पिवट बना रही है यहाँ पे। अब ये ऊपर जाके ऐसे नीचे भी आया है ना, तो दिस पिवट वी आर गोइंग टू शॉर्ट सेल। ठीक है, रिमेंबर वी विल वेट फॉर दिस पिवट टू क्लोज, पिवट टू ब्रेक। अगर ये ऊपर जाती है, वी विल वेट फॉर वन मोर पिवट टू फॉर्म। या this is basically a significant move. I do call it as a significant move, short sell के लिए, but we will wait for one more bar. Okay, done, completed. यानी कि जो ये ऊपर गया था, इसका पूरा ये इग्नोर कर दिया, तो एक it will go back to into this area. The price will go back in this area. We will sell it here. तो मैं सेल करने का कहाँ पे सेल करेंगे, वी विल सेल इट हियर 59,235 के आसपास। एंड आई जस्ट वांट टू सी वेदर वी आर सेलिंग इट नाउ। ये सिर्फ प्राइस एक्शन है और एक पैटर्न वाला प्राइस एक्शन है कि वेयर टू सेल, हाउ टू सेल, वीकनेस में कौन सा वीकनेस में सेल करना है, कौन सा इसमें से आपको एक अच्छा ट्रेड लेना है। एंड इसको सीखने के लिए दोस्तों 3 हफ्ता चाहिए। यू नीड 3 weeks टू लर्न दिस। एंड व्हेन यू लर्न दिस बेसिकली यू मेक अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन योर ट्रेडिंग डिसीजंस। ये जो रिप्ले वाला मॉडल है, दिस इज बेसिकली हेल्पिंग एवरीवन टू लर्न दिस एंड पीपल शुड टेक बेनिफिट ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अच्छा, अभी आपको क्या बोलता हूं कि आपका स्टॉप जो है अब यहां पे आ जाना चाहिए जस्ट टिक बिलो, यानी कि 59,259 में सेल किया था 59,231 पे। बिकॉज व्हेन इट क्रॉसेस बिलो इट यूजुअली गोज बैक, ट्राई टू अटेम्प्ट टू गो बैक। हाँ, जस्ट विथ वन लॉट, एक लॉट फ्यूचर्स के साथ 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए डालेंगे हर दिन। अंदाजे में हर दिन आप 3 से 4 हज़ार रुपए कमा सकते हो, कोई उसमें झंझट नहीं। अच्छा, नाउ योर स्टॉप विल कम टू हिट दिस प्लेस। ठीक है, अगर ये वापस जाती है यू आर स्टिल इन द बेनिफिट ऑफ कितना, एक 60-70 पॉइंट में हो, यानी कि ब्रेक इवन पे हो। ओके, 1 second, नाउ योर स्टॉप विल कम हियर 50% ऑफ दिस कैंडल। अच्छा, मैं 50% ऑफ दैट कैंडल में क्या ऐसी क्या स्टॉप है, मतलब क्या है, सिंपल है। आपने 14,700 रुपए कमाया इसमें, यू रियली डोंट वांट टू लूज इट, लूज एनीथिंग आउट ऑफ इट। Now your stop will come this way, this one. This is called one thrust, second thrust, and second thrust last leg.
देन यू विल हैव अ स्मॉल थ्रस्ट डाउनवर्ड। तो वो एक्चुअली प्राइस एक्शन में सिखाया जाता है। नाउ यू आर स्टॉप्ड आउट। वन सेकेंड, माफ कीजिए। एक्चुअली मेरा 58,822 को मेरी एग्जिट हो जाना चाहिए। एनी दैट मीन्स आई शुड मेक अराउंड अबाउट 14,000 ऑड। मैं अभी, हाँ ठीक है, वन सेकेंड। अच्छा, ये प्रैक्टिकल मेरा एग्जिट है। इसी प्राइस में मेरा स्टॉप लग जाना चाहिए था उधर, मेरा स्टॉप, क्योंकि नेक्स्ट डे इट गॉट गैप अप। आप एक बात चीज फिर से देखिए, यू हैव थ्री ग्रीन बार्स एंड यू विल वेट फॉर फोर्थ ग्रीन बार। डन, यू आर गोइंग टू बाय हियर। आई मीन ऐसे कैसे कृष्णा, तुम यहां से वहां बाय कर रहे हो, यहां से वहां सेल कर रहे हो? तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वी हैव वेरी सिंपल लॉजिक हियर। यू कैन बाय और यू कैन वेट फॉर, बिकॉज यहाँ पे हिस्टोग्राम इसके नीचे है, तो वी आर नॉट गोइंग टू बाय दिस, वी विल वेट फॉर इट। सॉरी, एक भूल गया था मैं। वी आर बिलो द हिस्टोग्राम, आई मीन पहले प्रीवियस हिस्टोग्राम से बहुत नीचे है। सो वी विल वेट फॉर वन मोर ड्रॉप हियर, और एक ड्रॉप के लिए वेट करेंगे। यू कैन शॉर्ट सेल, अगर इसमें शॉर्ट सेल का आपको इसमें मालूम होता है तो यू कैन शॉर्ट सेल। ये थोड़ा सा पुल बैक करेगा, पुल बैक करके नीचे की तरफ आएगा। यू कैन शॉर्ट सेल नाउ, एग्जैक्टली यू कैन शॉर्ट सेल। मैं शॉर्ट सेल कर देता हूं एक, यहां पे शॉर्ट सेल किया। हमारा टारगेट अभी दिस दिस लॉ इज माय टारगेट नाउ। देखते हैं। एंड आवर स्टॉप इज, आवर स्टॉप एक्चुअली, आवर स्टॉप विल बिकम, मैं एक मिनट, मैं यहां पे एक स्टॉप रख देता हूं। 59,000, 58,972, 59,001, 200 पॉइंट का स्टॉप है। और हमें नीचे कितना मिलेगा? 300 पॉइंट का मिलेगा। देखते हैं, विल सी। नाउ आवर स्टॉप विल कम एट द कॉस्ट 59,004, 58,944 को आएगा, क्योंकि बिकॉज समटाइम्स इट विल गो अप ऑल्सो। वी आर स्टॉप्ड आउट, वी आर स्टॉप्ड आउट। यानी कि दिस इज बेसिकली इंडिकेटिंग दैट दिस इज ए बी एंड सी, a very complex pattern. Only in complex pattern you get stopped out, otherwise you won't get stopped out. ठीक है? You can still short sell, you can, आप अभी भी एक बार इसका शॉर्ट सेल मिलता है तो कर सकते हो, but it is too complex. Yes, you can go short sell now. Okay, we are done. I mean that means this is going to be a loss actually. ये क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। By this time you know that it is making A B C D E, एक कंट्रैक्शन बना रहा है यहाँ पे, एंड इट कैन गो अप ऑल्सो। ठीक है? एंड दीज आर, ये लाइव ट्रेडिंग में आपको समझने की बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको एक ट्रेनर जो है वो आपको एक ट्रेनर ही बता सकता है कि भाई ये क्या बन रही है, बिना कोई इंडिकेटर का। इट कैन गो अप, नीचे आके फिर से एक बार इट कैन गो अप।
यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट सेल हियर, बट ये शॉर्ट सेल बहुत छोटा रहेगा, इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। इसके बाद आपको यहां से एक बाय सेटअप मिलेगी, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बाय सेटअप आपको मिल रही है। सो लेट्स बाय। We are going to get a buy setup here. Yes, we are buying. एक्चुअली ये बराबर कैंडल बराबर नहीं है। हाँ, आपको मालूम पड़ा अभी मैंने कैसे बाय सेटअप बोला? इफ यू अंडरस्टैंड दिस, दैट्स अ सेल सेटअप। खत्म हुआ। आपने देखा मैंने 3 या 4 ऐसे किया एंड वी मेड 29,000 रुपीज, एंड दिस बाय वाज सुपर बाय। यू हैड दिस। कहना क्या चाहता हूँ? कहना यही चाहता हूँ दोस्तों कि पीपल मेक लॉट ऑफ एरर्स while मेकिंग मनी। सो वी हैव अ सिस्टम। सी यहाँ पे हमने ये किया था, यहाँ से ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, आप उसी में रह सकते हो। देर आर इंडिकेटर्स विच विल हेल्प यू टू मेक मनी। सो ऑल दीज थिंग्स बेसिकली नीड्स ए प्रैक्टिस, नीड्स अंडरस्टैंडिंग, एंड नीड वेरी वेरी डेडिकेटेड एक्सप्लेनेशन। आपको एक एक्सप्लेन करेक्ट सही तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे तो तभी तो मालूम पड़ेगा ना दोस्तों कि आप कैसे पैसे बना पाओगे। अदरवाइज दिस इज रैंडम मार्केट। इस रैंडम मार्केट में एक पैटर्न जो है, एक पॉकेट्स है जो इंस्टीट्यूशन भी जानते हैं। द इवन इंस्टीट्यूशन नोज दिस। दीज पॉकेट्स विल हेल्प यू टू मेक मनी इन द रैंडम मार्केट। ठीक है, ऑल राइट, गुड लक।